गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रेवेन्यूज़ फ्रॉम जीएसटी। तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने मई 2022 में बहुत अच्छे जीएसटी में रेवेन्यूज़ कमाए हैं। अगर हम पिछले साल मई 2021 से कंपेयर करें तो इस बार जीएसटी से की जो टैक्स कलेक्शन हुई है वो 44% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, तो अब ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हमारे को पता लग रहा है कि इकोनॉमी जो है वो इट इज़ पिकिंग अप पेस। सो अब ये अचीवमेंट इतनी बड़ी क्यों है हमारे लिए, क्यों इसको जो है गवर्नमेंट इतना जो है दिखा रही है? बिकॉज ऐसा सिर्फ चौथी बार हुआ है जब से जीएसटी आया है कि जीएसटी जो है कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा हुई हो। ठीक है, इवन जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है उसमें भी 10,000 करोड़ से ज़्यादा के जो है 10,500 करोड़ के आसपास की जो है कलेक्शन हुई है सिर्फ एक महीने के अंदर। जीएसटी कंपनसेशन सेस आपको पता ही है ना, सिन गुड्स के ऊपर लगता है, कल ही हमने डिस्कस किया है, सिगरेट्स के ऊपर, ऐसी चीज़ों के ऊपर जो है, टबैको के ऊपर, इन सब के ऊपर जो है जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है। ठीक है, अब जो है एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि लगभग 20 ऐसी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके रेवेन्यूज़ जो हैं वो 44% से ज़्यादा, जो कि नेशनल एवरेज है, उससे ज़्यादा जो है ग्रोथ उसमें देखने को मिली है। तो ये कौन सी स्टेट्स हैं? जैसे कि आपकी इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसी टोटल 20 स्टेट्स हैं जिनकी 44% से ज़्यादा जो है टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिली है। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेसिक उसके बारे में अब देख लेते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ऑफ कोर्स सिंगल टैक्स लगता है पूरी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के ऊपर। जितनी बार सिर्फ वैल्यू एडिशन हो रही है, जब जैसे समझ लो वीट से जब वो ब्रेड बन रही है तो जितनी वैल्यू ऐड हुई है सिर्फ उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। फिर ब्रेड से जब वो आगे समझ लो रेस्टोरेंट में जाएगी, वो ब्रेड का यूज़ होगा, तो उसमें जो वैल्यू एडिशन हो रही है सिर्फ उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, ब्रेड के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा। और उससे पिछली जो आपका स्टेज थी वीट से ब्रेड की, उसमें तो वीट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल जो है वो आपके जितने भी मैटर्स होते हैं जीएसटी से रिलेटेड वो डिसाइड करता है, और उसको चेयरपर्सन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, सो नेक्स्ट अपना टॉपिक है गन कंट्रोल इन द यूएस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है। तो यूएस जो है अभी 2 एपिसोड्स ऑफ मास शूटिंग देखने को मिली है पिछले 11 दिन के अंदर, जिसमें 30 के करीब जो है एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन जो है वो मर चुके हैं। ठीक है, सो 30 के आसपास टोटल लोग मरे, उसमें एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन भी की भी मौत देखने को मिली है। तो इसका सारा जो श्रेय है, ये सारा जो वहाँ पर इशू चलता है गन कंट्रोल का, गन जो है यूज़ का, वो किस वजह से हो रहा है? हमने पढ़ा भी था इसके बारे में, सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि उस टाइम पर 1790s में इसलिए लाई गई थी क्योंकि उस टाइम यूएस को थ्रेट था कि फ्रेंच फोर्सेस या ब्रिटिश फोर्सेस उनको इन्वेड करेंगे, तो उनके पास आर्मी की बजाय वो अपने लोगों को भी चाहते थे कि उनको भी गन चलानी आनी चाहिए, इसलिए उन्होंने वो राइट दे दिया था बिल ऑफ राइट्स में। लेकिन अब तो ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है ना, अब तो यूएस में इन्वेजन नहीं कर सकता कोई, यूएस इतनी बड़ी पावर बन चुका है, तो अब तो एटलीस्ट इस राइट को हटा लेना चाहिए। लेकिन वहाँ पर अभी भी ये राइट है, लोगों के पास गन रखने का अधिकार है, उसकी वजह से जो है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता है गन का, और वहाँ पर ये सिचुएशन बनी हुई है अभी तक। ठीक है, तो इतने साल बीत गए, 300 साल में भी वो अपने इस इशू को सॉल्व नहीं कर पाए हैं, बिकॉज वहाँ पर एक कल्चर बन गया, नेशनल राइफल एसोसिएशन, बड़ी बड़ी लॉबीज़ बन गई हैं जो कि अब गन को ख़रीदने की जो राइट है यूएस के लोगों का, उसको जाने नहीं देना चाहती है। ठीक है, अब इंडिया में क्या इसका स्टेटस है? तो अब इंडिया में जो है लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर किसी को गन का लाइसेंस अप्लाई करना है तो वो एटलीस्ट 21 साल का होना चाहिए, उसके ऊपर कोई ऑफेंस किसी ऑफेंस के लिए वो कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। फिर जब वो अप्लाई करता है तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, होम मिनिस्ट्री, वो पुलिस, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को बोलती है कि एक थॉरो वेटिंग की जाए उस पर्सन के बारे में, तभी उसको जो है वो लाइसेंस मिलता है गन का। ठीक है, आर्म्स एक्ट हमने 2019 में अमेंड भी किया था, जिसके अंदर हमने क्या कहा कि एक इंडिविजुअल जो है वो 2 से ज़्यादा गन्स नहीं रख सकता, इससे पहले 3 गन रखने की जो है वो अलाउ किया गया था। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनआरआई मैरिजेस। तो सोशल इशू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक इंटरनेशनल रिलेशंस का भी एस्पेक्ट आएगा, वो भी हम देखते हैं। तो अभी नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने एक कंसल्टेशन किया है, अपने ही में डिस्कशन किया है, और उन्होंने उसमें देखा है कि जो हमारी नॉन रेजिडेंट इंडियन मैरिजेस हैं उसमें विमेन के लिए हमको, जो जिन विमेन को अबैंडन कर देते हैं उनके हस्बैंड, जो एनआरआई हस्बैंड्स होते हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए एक नेशनल हेल्पलाइन बनानी चाहिए, एक डेडिकेटेड फंड भी बनाना चाहिए तो उनको असिस्टेंट देने के लिए। और एनसीडब्ल्यू ने ये भी बोला है कि एक नॉन बेलेबल वारंट इशू करना चाहिए उस मेल ऑफेंडर के अगेंस्ट जिसने अपनी वाइफ को अबैंडन कर दिया अब्रॉड में। ठीक है, फिर इसमें कहा गया है कि एक वेबसाइट बनाओ
जिसके अंदर अभी होता क्या है कि जो मेल जिसने अपनी वाइफ को अबेंडन किया है वो बार बार अपने एड्रेस को चेंज कर लेता है, तो उसको समन भेजने का जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो दिक्कत होती है। तो इन्होंने कहा है एनसीडब्ल्यू ने कि आप ऐसा करो, एक वेबसाइट बना दो, उसके ऊपर समन अपलोड कर दो, और ये फिर अब हम डीम किया करेंगे कि उस पर्सन ने वो समन, उस पर्सन को समन भेज दिया गया, क्योंकि उस पर्सन की जिम्मेदारी है वो समन को देखने की उस वेबसाइट पर। अब इसके अंदर और भी डिस्कशन किए गए हैं कि फॉरेन जजमेंट्स जो हैं वो हमारे जो है एनआरआई के केसेस में जो है, समझ लो यूएस में कोई केस है, यूएस का कोई एनआरआई था, वो इंडिया से मैरिज करके गया और उसने अपनी वाइफ को वहाँ पर छोड़ दिया, तो यूएस कोर्ट जो जजमेंट दे रहा है वो कंक्लूसिव इंडिया में नहीं मानी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हम हेग कन्वेंशन के पार्टी नहीं है, ठीक है। अब हेग कन्वेंशन के बारे में जो है इसमें कोई डिस्कशन नहीं हुई है, लेकिन हमको देखना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हेग कन्वेंशन न्यूज़ में आ गया, तो हमें देखना पड़ेगा कि हेग कन्वेंशन ऑन चाइल्ड अबडक्शन है क्या। तो हेग कन्वेंशन जो है वो चाइल्ड अबडक्शन के ऊपर है। मतलब होता क्या है कि एक समझ लो एक जो है पेरेंट्स हैं, तो हस्बैंड वाइफ जो है उनका बेबी है, तो वाइफ जो है, कई बार क्या होता है कि हस्बैंड जो है अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, समझ लो यूएस में डोमेस्टिक वायलेंस करता है, तो वाइफ जो है वो अपने बच्चे को लेकर वापस आ जाती है इंडिया, ठीक है, भाग आती है क्योंकि उसको डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करना है। तो इस केस में क्या होता है कि उसके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं उस वाइफ के ऊपर कि उसने चाइल्ड को अबडक्ट किया और वो भाग गई है, ठीक है। तो इंडिया जो है इसीलिए हेग कन्वेंशन को साइन नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, विमेन के अगेंस्ट चला जाएगा, क्योंकि विमेन के ऊपर ये आरोप लगेंगे कि वो अबडक्ट करके अपने चाइल्ड को भाग गई है, ठीक है। तो इस हेग कन्वेंशन के अंदर जो है चाइल्ड अबडक्शन से डील किया जाता है, और इसमें क्या अज्यूम किया जाता है, अब क्या अजम्पशन ली जा रही है कि एक पर्सन जो एक चाइल्ड जो कि जिसको लेकर जो है अगर कोई पेरेंट भाग गया है और वो किसी भी कंट्री में, समझ लो यूएस में एक कपल रहता था, उनका चाइल्ड था, तो जो जो वाइफ है वो किसी भी केस किसी भी वजह से अगर वो अपने बच्चे को लेकर समझ लो इंडिया में भाग आती है, कोई भी रीज़न हो सकता है पीछे, तो उसमें क्या अज्यूम किया जाएगा हेग कन्वेंशन में, जो पार्टीज़ होंगी, स्टेट पार्टीज़ जिन्होंने हेग कन्वेंशन जो है वो साइन किया है, तो इसके अंदर क्या अज्यूम किया जाएगा कि जो बच्चा है उस जहाँ का वो हैबिचुअल रेजिडेंट है, इस केस में कहाँ का वो रेजिडेंट होगा, यूएस का रेजिडेंट, क्योंकि उसकी जो मदर है वो उसको लेकर इंडिया में भाग के आई है, तो वहाँ की कंट्री जो मतलब यूएस में जो जजमेंट पास होगी वो ही एप्लीकेबल होगी हेग कन्वेंशन की स्टेट पार्टीज़ के ऊपर। तो मतलब अगर कोई वाइफ उसको डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और वो यूएस से अपने बच्चे को लेके भाग के यहाँ आ जाती है, तो अगर हमने हेग कन्वेंशन साइन किया होता तो उसको हम जो वाइफ है जो जो यहाँ पर इंडिया में लेकर आई है बच्चे को, उसको यूएस के कोर्ट की जजमेंट माननी पड़ती, क्योंकि हमने हेग कन्वेंशन अगर साइन किया होता। इसीलिए इंडिया जो है हेग कन्वेंशन को साइन नहीं कर रहा है। साइन जो हेग कन्वेंशन है ये चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16 के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इंडिया का यही स्टैंस है कि हरासमेंट ऑफ वुमेन होगी जो कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस या फिर मैरिटल डिस्कॉर्ड से एस्केप करके भागी हैं दूसरी कंट्रीज से और इंडिया में वापस आना चाहती हैं अपने बच्चे को लेकर, तो उनको ऊपर जो है एक तरह से उनके ऊपर हरासमेंट की जाएगी। गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई थी, उस कमेटी में भी कहा कि ये कन्वेंशन साइन नहीं किया जाना चाहिए। उसके अगेंस्ट जो है रिकमेंडेशन ये दी गई कि चाइल्ड रिमूवल डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन अथॉरिटी बनाओ जो कि कस्टडी ऑफ द चाइल्ड के बारे में डिसाइड करेगी, ठीक है। सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी देख लेते हैं, एक स्टेचुटरी बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है, 1992 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। ऑफ कोर्स क्या मतलब मोटिव क्या है इसका, इक्वालिटी अचीव करना और वुमेन को कैसे इक्वल पार्टिसिपेशन हम इंश्योर कर सकते हैं इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गिग वर्कर्स। तो इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि क्या है कि अब एमर्जिंग फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये एमर्ज हो रहे हैं, तो जो हमारी यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट में जो सर्विस करते हैं उनको इसके बारे में, ऑफिशियल्स को इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि इनकी जो है गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी या सोशल सिक्योरिटी को के प्रोविजंस को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इसीलिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन किया जाएगा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में, और ये गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होते हैं, इनके वर्किंग कंडीशंस कैसे होते हैं, ये सब इनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो ठीक से सोशल सिक्योरिटी राइट्स जो है इन वर्कर्स के उसको इंप्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो अब आप खुद भी देखो कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं। गिग वर्कर्स आपके जैसे समझ लो आपके जो जोमेटो या स्विगी के एम्प्लॉयज़ होते हैं या अमेजोन के जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, एग्जाम्पल है सिर्फ ये डिलीवरी पार्टनर्स, तो ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं,
ठीक है, ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फर्म में भी काम कर सकते हैं, या फिर टेम्पररी वर्कर्स होते हैं। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कोड जो हमारा 2020 का है, जो पास हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए जो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लेके आ सकती है। ठीक है, सो अब क्या प्रपोज किया गया इस गिग वर्कर्स की ट्रेनिंग के जो है जो आपके ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के प्रपोजल में, तो इसमें कहा है कि जो वीवी गिरी इंस्टीट्यूट है यूनियन लेबर मिनिस्ट्री के अंडर, उसके अंदर जो है जो ये ऑफिशियल्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी और उनको सजेशन दिया जाएगा कि आप कौन कौन से जो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आप दे सकते हो गिग वर्कर्स को। तो जैसे एक मॉडल उसमें दिखाया गया है कि थाईलैंड और मलेशिया में क्या होता है कि कोई भी समझ लो एग्जाम्पल लेते हैं कि जोमेटो की आपने कोई डिलीवरी की, ठीक है, तो जो आपका गिग वर्कर है जो उसने डिलीवरी की है, तो उसका जितना भी उसको पैसा मिलेगा, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, कितना भी मिल रहा है, उसका 2% जो है वो उसके हेल्थ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। ठीक है, अब एम्प्लॉय रिलेशनशिप को कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं गिग इकोनॉमी में, इसके लिए जो है ये ट्रेनिंग दी जाने वाली है। क्यों ज़रूरत है ये ट्रेनिंग के लिए? बिकॉज जो हमारे गिग वर्कर्स हैं उनके अनसर्टेन वर्किंग आवर्स हैं, इनसफिशिएंट इनकम है, तो उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ एक स्कीम है आपके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। इसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ जो है शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, जो पुअरेस्ट शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए ये स्कीम लेके आई गई है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है कि जो मेरिटोरियस पुअर स्टूडेंट्स हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ के, जिनकी पेरेंटल इनकम जो है एनुअली 2.5 लाख से कम है, उनको 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो है हाई क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन जो है वो दी जाती है। ठीक है, अब जो है होता क्या है कि इन मेरिटोरियस एससी स्टूडेंट्स को स्टेट्स या यूटीज़ में कैसे सिलेक्ट किया जाता है, तो उनका एक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा, और जो उसको क्लियर करते हैं उनको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। और जब ये 9th के 11th के बाद जब वो 12th स्टैंडर्ड क्लियर कर लेते हैं, तो उनको जो अगली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है एससी स्टूडेंट्स के लिए, वो भी जो है उसमें भी कनेक्ट करने के लिए ट्राई किया जाता है। ठीक है, अगर वो उसके लिए ऑफकोर्स एलिजिबल हो तो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूरेनस एंड नेपच्यून। तो अभी आपने देखा होगा, अब ये देखो, ये आपका यूरेनस है, ये आपका नेपच्यून है, लेकिन आप देख रहे हो नेपच्यून का जो ब्लू कलर है वो थोड़ा ज़्यादा डेंस है। तो यूरेनस का जो ब्लू कलर है वो इतना लाइट क्यों है, तो इसकी जो है एस्ट्रोनॉमर्स को जो है वो एक्सप्लेनेशन मिल गई है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ये कह रहे हैं कि जो यूरेनस है उसके आसपास जो हेज़ है वो बहुत थिक है, तो जो ये हेज़ जो एक तरह से जो एटमॉस्फेयर है उसका, उसकी वजह से जो है लाइट जो है ज़्यादा आ जाती है, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है वो, तो उससे क्या हो रहा है कि ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर होती है जब उसमें, तो जो है जो है जो ब्लू लाइट जो है स्कैटर इसमें ज़्यादा होती है, क्या नाम है इसका, जो नेपच्यून में, उसकी वजह से यूरेनस जो है आपका उससे कम जो है वो लाइट दिखता है। ठीक है, उसका जो आपका नेपच्यून है वो ज़्यादा उसका थिक एटमॉस्फेयर की वजह से जो है वो ज़्यादा ब्लू दिखता है एज़ कम्पेयर टू यूरेनस। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हिमार सिस्टम्स। तो हिमार क्या है? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। तो ये यूएस ने डिसाइड किया है कि यूक्रेन को वो 4 हिमार सिस्टम्स भेजेगा। एक लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो कि यूएस आर्मी को 1990s में यूएस गवर्नमेंट ने दिया था। अब इसमें मीडियम रेंज रॉकेट जो है वो डाले जा सकते हैं और इसकी रेंज अबाउट 300 किलोमीटर्स है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is revenues from GST. So this topic is important for from your governance section. So let us see this topic now. So what has happened is that the government of India, rather the state governments and the union government, they have received GST revenues to the tune of more than 1.4 lakh crore rupees. So this is a very big achievement if we compare it with the last year. If we compare it with May 2021, then we have achieved a growth rate of almost 44% in GST revenues this year. Okay, so why this is more why this is a big achievement, or why this is a more important achievement? So because this is only the 4th time that monthly GST collections have crossed the 1.4 lakh crore mark, and even the GST compensation cess that we discussed yesterday, which is
collected from the sin goods like tobacco and cigarette. The collections from such goods have also reached the 10,500 crore figure, which is a very big figure in itself. And almost 20 states and union territories have seen that their revenue growth was faster than the national average of 44%. So mostly the industrial states have seen this much growth, and this is a good news. It is a testimony to the fact that our economy is growing despite the uh, uh, adverse circumstances at the global level. The inflation is also high because of the Russia-Ukraine war. Despite all that, our economy is showing good signs. So that would be a good thing for us. Okay, so about the goods and services tax, you know that it is a destination-based taxation system established by the 101st Constitutional Amendment Act. So it's a single tax which is imposed on the goods and services in its entire life cycle. So what happens is that, let's suppose, why is it a value addition tax? So for those who do not know about the term value addition, so let's suppose that you impose a tax of 5% on wheat. Okay, so you have collected 5% of tax on wheat. Now when you make bread out of it, okay, so that bread would of course be more costlier than the wheat. If you impose 5% or let's say 8% tax on the entire bread, then it would not be fair, because it would amount to double taxation, because you have already collected tax from the wheat, 5% of tax. Now you have to collect tax only on the value that has been added to that wheat to make the bread. So you only collect the value, the tax on the value addition. Okay, so that by that method we eliminate the previous stage of that product. So we end up only taxing the value added to any raw material. Okay, so that's why it avoids the double counting or the double taxation on any product. So all the tax matters on the all the GST matters are decided by the GST Council. Of course, the chairperson of this GST Council is the Finance Minister of India. Okay, so the next topic is gun control in the US. So this topic is important for your international relations as well as social issues. So there has been a very big episode of mass shootings in a span of 11 days in the US, which has killed about 30 people, including elementary school children. So the fault lies in the Second Amendment to the US Constitution, which we have already discussed about, I think, last week. And it is the root cause of all the firearm related violence. So you know that we discussed about it, that the Second Amendment was inserted in the US Constitution in the Bill of Rights, that is their fundamental rights, in the 1790s period, because at that time the US was anticipating invasion from either the Britain or France. So for that they needed a force more than their army. So what they decided, that all the youth in the US would have to bear arms, and they would have to learn how to use arms. So for that purpose they introduced this Second Amendment. But now it is not the case. US is not anticipating any invasion from any foreign country. The dynamics have changed now. So there is no or little relevance of this Second Amendment of the US Constitution, and it should be dispensed away. But what has happened is that the gun lobby in the US has become so strong that it influences all the politicians. There is that we have discussed about it, the National Rifle Association. It's a very big gun lobby which has found support amongst a lot of politicians. So they do not want the government to pass any legislation to take away this Second Amendment of the US Constitution. Okay, so even the US Supreme Court has backtracked or retreated from its amendments or the judgment that they have issued against the Second Amendment. So, but this is not the case in India. Gun license application is very strict. In India, you must be at least 21 years of age, and you should not be convicted of any offense involving any violence. You should not be you should not be of unsound mind or a threat to public safety and peace. Once you apply for it, the licensing authority, that is the Home Ministry, asks the nearest police station to submit a report about the applicant. And even if you clear all these procedures, you are not allowed to hold more than 2 guns, which was decided after the latest amendment in 2019. So the next topic is very important, because we're going to discuss several issues
in this topic. So this topic is important for your social issues also, as well as for the international relations topic too. So this is NRI marriages. So recently, an National Commission for Women was holding discussion, and they were discussing about the state of our NRI marriages, the state of women in our NRI marriages. So they were discussing that if in case the male in a marriage of in an NRI marriage deserts the women, what how the government can help them. So they said that a national helpline can be made, a dedicated fund can be made to provide assistance to them. Okay, so what has happened is that they also discussed that a non-bailable warrant must be issued against that male offender who is residing abroad and he has abandoned his wife. So what happens is that generally this male keeps on changing the address. So whenever we have to issue the summon to that male to be presented in India, the person gives the excuse that the summon was not issued to him. So NCW has suggested that we should create a special website, and the summons must be posted there. And once the summon is posted there, it should be deemed as served on that person. Okay, so the government would not have any liability to serve that someone in person to that male offender. Okay, it has also, this discussion has also talked about the ex parte judgments on divorce which has been obtained by husbands living abroad. So they have discussed that how the section 13 of the Civil Procedure Code does not allow these foreign judgments to be conclusive, of course, in certain conditions. And this consultation did not include the suggestion or any proposal that India should sign, whether India should sign the Hague Convention or not. So what is this Hague Convention? Okay, so this topic is very important from the social issue perspective also, and the international relations perspective also. So this Hague Convention is basically on child abduction. So this provides a method to return a child internationally abducted by a parent. So what has happened is that, like I was telling you with an example, so let us suppose that an NRI marriage occurred. A male who was living in the US married an Indian woman, and he took away the bride with him, and they had a child. But the male, with passing time, the male started domestic violence on the woman. Okay, so in that case, if the woman takes up her child and moves back to India to escape the violence, if we sign the Hague Convention, then there would be a case against the woman who has escaped domestic violence that she has abducted her child. Okay, so that's why we're not signing this Hague Convention, because it is assuming that any child any child custody, if taken by a parent, then if a parent takes custody of a child and takes that a child to another foreign location, the court of the country where the child is a habitual resident, in this case the child is a resident of US, and his or her mother has taken away to India to escape the domestic violence of her husband. So in that case, the US courts would decide about the custody of the child, whether it should go to the mother or to the father. Okay, and that is not acceptable to us, because this would lead to harassment of women who are escaping domestic violence. It would dissuade the women from escaping the country, and this would force them to keep on tolerating domestic violence abroad. So that's why we're not signing this Hague Convention. This applies only to children under the age of 16, and we have opposed this Hague Convention despite the pressure from US government and other European countries. So we even formed a committee to examine if we should sign this convention or not. So this committee said that we should not sign it. Rather, we should set up this Child Removal Disputes Resolution Authority, which would act as the nodal body to decide on the custody of child. Okay, but of course there are certain reports that government is contemplating that they can assign the role of this Child Removal Disputes Resolution Authority to the NCPCR. Okay, so about what is the National Commission for Women? You know that it's a statutory body which was formed in January 1992 under the National Commission for Women Act of 1990, and the aim is to, of course,
enable women to achieve equality and equal participation in all spheres of life. So the next topic is gig workers. This is again a social issue. So you know that emerging forms of employment, new forms of employment, the gig workers, platform workers, these are mostly outside the traditional employer-employee relationship. You know that these Zomato delivery boys or even the other freelancers, so they are not part of the traditional employee-employer relationship. So that's why they are called gig or platform workers. So because our central government and state government employees or the officials, they are not well versed with the technological changes or these new forms of employment, the central government has decided to train these officials so that they can enforce the social security code 2020 provisions effectively to secure the social security rights of these workers. So these gig workers are basically independent contractors, online platform workers, like we have discussed about it. So even the social security code of 2020 allows the central and state governments to notify specific schemes for these gig workers, platform workers, or unorganized workers who are basically the workers outside a traditional employer-employee relationship. So the proposal is to use the services of VV Giri Institute, which is the training arm of Union Labour Ministry, to organize programs so that these government officials can be trained how the global best practices regarding gig and platform workers can be adopted. So there is similarly a model has been discussed, which is adopted in Thailand and Malaysia, where the gig workers, they are given health and accident insurance by deducting 2% of their of every ride, so that their social security needs can be taken care of. Okay, so why is these needs are need to be protected? Because they have uncertain working hours, they have insufficient income, so that's why we need to give them social security. And this is a very novel idea of deducting 2% of for every ride from them, either even the employer or the, in this case, Zomato or Swiggy or this Amazon, Flipkart, they can pay on their behalf for every ride that they take, and these workers can be given the social security benefits. Okay, so the next topic is Shresht. So Shresht is basically scheme. This topic is important for your social issues again, and this is a scheme for the poor scheduled caste students. So this is providing quality education and opportunities to them. The name of the scheme is Scheme for Residential Education for Students in Targeted Areas, and it is being implemented by the Ministry of Social Justice and Empowerment. So what happens is that the students who are meritorious, but their parents have an annual income of less than 2.5 lakh per annum, they are given high quality residential education from class 9th to class 12th. So how they are selected, of course, so they have to pass a national entrance test for Shresht, which is conducted by National Testing Agency. So a specified number of these meritorious SC students are selected. They are given best private residential schools affiliated by CBSE. They are given the training in these schools, and after they clear the 12th standard, they are, if possible, of course, they are connected to the post matrix scholarship scheme for SC/ST students. Okay. So the next topic is Uranus and Neptune. So astronomers have found an explanation as to why this Neptune and Uranus appear in different colors despite being blue in color. So you know that this Neptune is very dark blue, but this Uranus is a little fading blue. This has a fading or pale blue color. So they have observed that this Neptune is a rich deep blue, while Uranus is a pale shade of cyan. Okay, the reason behind is it that Uranus is a thicker, the haze around Uranus is thicker than if we compare it with Neptune. So because of this haze, the light is this light color is witnessed as compared to Neptune. Okay, so this is what has been observed by the astronomers. So the next topic is HIMAR systems. So US has decided that they would be sending 4
HIMARS systems to Ukraine. So basically, this is a light multiple rocket launcher system developed for the U.S. Army in 1990s, and its name is High Mobility Artillery Rocket System. It's a medium range rocket system, and it has a range of about 300 kilometers. Okay, so it is also capable of firing long range missiles also. And tactical missiles system also. So this is the newest addition to the artillery which is being sent by the US to Ukraine. So these were our topics for today. Please download the weekly current affair compilation from our Telegram group today. And very soon, in a day or two, we will also be sharing the monthly May 2022 current affairs compilation with you. So just join the Telegram group, which has been the link for which has been given in the description below, and join us there so that you can get the up-to-date current affairs PDF to download. Okay, so thank you so much. We'll meet next time with new topics. Until then, take care.